चले इच्छा नाल तेरी पंच तत्व सेवा विच तेरी श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव जिस ते कृपा गुरु दी तेरी पंच तत्व सेवा विच तेरी श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव जिस पे कृपा गुरु दी Hello. We are going to start our program. It was supposed to be started at 7. So we already are waiting for a few more guests. They will join when they join. So everyone, welcome. Namaste, namaskar. Today is a very pious day. Some of you might not know. It's Guru Purnima. It's also called Vyasa Purnima for Veda Vyasa, who wrote Mahabharata. And he is considered to be the guru for every human being. So, guru, it's a 2-syllable word. Gu means darkness, ru means light. Guru is someone who swallows your darkness. And guru doesn't always have to be a spiritual guru. Some of you might have spiritual guru. Some we know the moment we take birth, our parents are our first guru. And then teachers, they are our next gurus. But I feel like grandparents, your friend, anybody can be a guru as long as you're gaining some knowledge from them and passing it on to the next generation. So without any further delay, let's start tonight's program. I would like to invite Jagannath Vaina, Hari Vaina, and Rajiv Mainiji to come up here and light the diyas so we can formally start our event for tonight. And when they will be lighting the diyas, we have Debasri here, a beautiful singer. She's going to sing a bhajan. दीपं ज्योतिं परं ज्योति दीपं ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणं
आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीपाय गुरुज्योति नमोस्तुते गुरुज्योति नमोस्तुते गुरुज्योति नमोस्तुते ॐ शान्तिः 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 जय श्री गुरुदेव। Thank you, Debashri. That was really good. And to start with a mantra always purifies the environment. So we'll move on to our next thing for tonight. I'm going to read a notation on Guru Bhagwat, Hindi Gayan, and it's from Sai Kangan in New Delhi. Shri Guru Bhagwat, originally authored by Guruji Dr. Chandrabhanu Satpatiji in Odia language, runs into 8 volumes, consisting of more than 34,000 lines. This book is widely available in more than 16 different languages. Also musically composed by Guruji Dr. Satpatiji in Odia, Bhojpuri, Maithili, Asami, Telugu, Punjabi, Rajasthani, and sung by famous singers like Srimati Sarda Sinha, Padma Bhushan Awadi, Hasdeep Kaur, Jubin Garg, Torali Sarma, S. Janaki, and many others. The first 34 quadruplets of Sri Guru Bhagwat, Volume 1, have been translated into Hindi and music composed by Guruji Dr. Satpatiji. We are going to now play the video from the event that happened this morning at Delhi. In between, please feel free to walk up and get some snacks. And I will request all of you to be seated and watch this program. I watched it this morning. It's really wonderful to get Guruji's message. So please. श्री गुरु भगवत गुरु परंपरा की मूल विशेषताओं के साथ गुरु के प्रति समर्पण के विषय को विस्तार से दर्शाती है। इस ग्रंथ में मानव जीवन के अमूल्य पहलू, श्री गुरु की महानता, गुरु के विभिन्न स्तर, गुरु शिष्य संबंध, विभिन्न प्रकार के शिष्य, गुरु को सेवाएं प्रदान करने का महत्व और अंधविश्वास सिद्धांत जैसी अवधारणाएं हैं। अब देखते हैं गुरु भागवत पर एक शॉर्ट फिल्म। Guru Bhagwat, originally written in Odia language in 9-lettered poetic meter, is a magnum opus by Dr. Saraswati. Guru Bhagwat, seldom does written in Odia language in 9-lettered poetic meter, is a magnum opus by Dr. Saraswati. In all aspects, unimaginable master-disciple relationship. Seldom does any literary creation on the subject touches upon the inexplicable concepts at a micro level, yet with unimaginable lucidity. This means, O Govinda, from your holy feet, honey like nectar always flows. Drinking this honey nectar,
The Vraj women got salvation. The melody of this couplet from the Uriya Bhagwat of Shri Jagannath Das reverberated through author's minds day and night. The sweet embrace of ecstasy through that divine song propelled him to write on Shri Sainath Maharaj 4 lines in the Nabakshari Chand, which means a poetic meter of 9 letters in each line in a couplet. Not only in English and Hindi, but also in many regional languages of India, there seems to be no such book containing the theme of Guru tradition in its totality. This book elaborately depicts the theme of devotion towards the Guru with the basic features of Guru tradition. This treatise contains invaluable aspects of human life, like the greatness and uniqueness of Shri Guru, the different levels of Guru, the Guru-disciple relationship, and the importance of rendering services to the Guru. Inspired by these verses, many groups and organizations have taken up the task of taking Shri Guru Bhagwat to people in India and abroad. माया विच हर जीव फसे रखिया लई बेनती करे श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव भोग चिंता ते पावता शोक दर दर ते अनुता विवरण प्रस्तुत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी मिरांडा हाउस से रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिंदी मिस कुंदन सिंह जी। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आपको हम सभी की ओर से श्रद्धा युक्त प्रणाम। आज मुझे संत कवि दादू की पंक्तियां याद आ रही हैं। भव सागर में डूबता सदगुरु काढ़े आए, दादू केवट गुरु मिलिया लिए नाम चढ़ाए। यह श्री गुरु की अहेतुक कृपा ही है जो उन्होंने श्री गुरु भागवत रूपी नौका बनाई है। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज यहाँ हम सब श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी, जिनका महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व सुविख्यात है और जो अनवरत अनगिनत लोगों के जीवन को संवार कर उन्हें राह दिखा रहे हैं, उनके द्वारा रचित एवं संगीतबद्ध श्री गुरु भागवत के प्रथम प्रार्थना के हिंदी गायन के डिजिटल म्यूजिक एल्बम के लोकार्पण कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। मूल ओडिया से इसका हिंदी काव्यानुवाद भी गुरु जी डॉक्टर सतपथी जी द्वारा ही किया गया है। यह प्रार्थना गुरु भक्ति का सार है। इस एल्बम में अनन्या, साहिबा एवं आकांक्षा प्रिया द्वारा मधुर गायन और शुभांग द्वारा गिटार वादन किया गया है। इस एल्बम को बनाने में मनीषा एवं मशूनी का भी विशेष सहयोग रहा है। कुछ ही समय पश्चात यह हिंदी म्यूजिक एल्बम स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। श्री गुरु भागवत में विभक्त इस प्रार्थना के संगीतबद्ध स्वर के अन्य भाषाओं में भी लोकार्पित हो चुके हैं। 7 भाषाएं और भी
में निकल चुके हैं, जो कि टाइम्स म्यूजिक, सारेगामा आदि जैसी बड़ी म्यूजिक कंपनियों द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनमें शारदा सिन्हा, हर्षदीप कौर, एस चांकी जैसे विख्यात गायक गायिकाओं द्वारा गायन किया गया है। यह प्रार्थना गुरु जी डॉक्टर सरस्वती जी द्वारा मूल रूप से उड़िया भाषा में रचित इस युग के महान ग्रंथ श्री गुरु भागवत के चंद मोती हैं। वास्तव में अब हिंदी बेल्ट बहुत बड़ी है और करोड़ों हिंदी भाषी लोगों की आत्मा को संतृप्त करके आज इस जगत के कोलाहल में यह म्यूजिक एल्बम उन्हें सुकून देगी और एक नए संगीत से उनका आस्वादन कराएगी। जैसा कि अभी कहा कि ये जो गुरु भागवत है, जिसका कि प्रथम अंश, प्रथम प्रार्थना के जो कुछ भाव हैं, करीब 34 छंद हैं जो कि इस म्यूजिक एल्बम में है। वास्तव में ये गुरु भागवत सन 2001 में, जैसा कि नंदिता ने अभी आपको बताया, कि कार्तिक पूर्णिमा की मध्य रात्रि में भाव स्मृति से स्वतः मिश्रित इन छंदों को जब गुरु जी डॉक्टर सरस्वती जी ने लिखना आरंभ किया, तब उन्होंने इसे ग्रंथाकार में प्रकाशित करने के विषय में सोचा भी नहीं था। वर्षों बाद सन 2010 में इसका प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। सन 2020 तक आते आते इस ग्रंथ की 34,000 से भी अधिक पंक्तियां लिखी जा चुकी हैं। हालांकि इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन किसी महती बात की जो चर्चा है वो बारंबार सुख देती है। वास्तव में अब तक इसके 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। वेदों उपनिषदों से लेकर शैव, बौद्ध, वैष्णव, संत, सूफी परंपरा में अब तक किसी रचनाकार ने गुरु तत्व की काव्यमयी इतनी सर्वांगीण अभिव्यक्ति नहीं की है। इस महत् ग्रंथ में 750 से भी अधिक शीर्षकों के अंतर्गत गुरु तत्व का विशद विवेचन किया गया है। समय सीमा का ध्यान रखते हुए वो सभी का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है। साथ ही इसमें स्तवक समेत 64 प्रार्थनाएं हैं। इस ग्रंथ में विश्व के सभी आध्यात्मिक गुरुओं की मूलभूत मान्यताएं सार रूप में समाहित हैं। इसमें गुरु परंपरा के सूत्र में प्राचीन युग से लेकर वर्तमान तक भारत में प्रचलित विभिन्न धार्मिक परंपराओं को मोतियों की भांति पिरोया गया है। जब डॉक्टर सरस्वती जी ने इस पर चर्चा की, उन्होंने कहा था कि पौराणिक चरित्रों का जो वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, जगन्नाथ जी ने उसका उड़िया में अनुवाद किया था और चरित्र का वर्णन करते समय उन्होंने अपनी भावधारा को भी उसमें मिला दिया था। किंतु गुरु भागवत उस प्रकार का ग्रंथ नहीं है। गुरु भागवत में नाम लिए बिना गुरु एक व्यक्तित्व है जिनकी आज भी जरूरत है। उनका चरित्र, उनकी कार्यशैली, समाज के प्रति उनका अवदान जो पहले से था वही अब भी है। भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए भी इसमें बहुत से उपादेय विषय, जैसे कि अंधविश्वास से मुक्त होना, परिवर्तित परिस्थिति में परिवार की क्या आवश्यकता है, जिन परंपराओं के आधार पर हम प्रतिष्ठित हैं, आज उनका लोप हो रहा है क्योंकि समय बदल रहा है। गुरु भागवत के माध्यम से आगामी पीढ़ी को एक दृष्टिकोण देना भी गुरु जी डॉक्टर सरस्वती जी का महत्व उद्देश्य है। इसीलिए इसमें आदि गुरु माता पिता पर भी स्तवक लिखा गया है, जो बहुत ही मार्मिक है, जो इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया है। अभिशाप और आशीर्वाद के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जो पात्र नहीं है, जो झूठा है, पैर छूकर उसका सशक्तिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो गुरु माता पिता है उनके पैर छूइए, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका दर्द माता पिता समझें, पर उनका भी दर्द आप समझते हैं क्या? गुरु जी डॉक्टर सरस्वती जी का कहना है कि जो केवल अपने दर्द को समझता है वह कभी भी भक्त नहीं हो सकता। आज श्री गुरु भागवत जन साहित्य का रूप ले चुका है, वह लोगों के हृदय को छूता है। सबको लगता है कि यह उनका संगीत है, उन्हें लगता है कि उनके
संबंधित है। अब तो विभिन्न राज्यों में गुरु भागवत का नियमित सामूहिक पारायण भी किया जाता है, जिसके विषय में नंदिता ने भी उल्लेख किया है। YouTube पर भी विभिन्न भाषाओं में श्री गुरु भागवत के अंश प्रसारित होते हैं। इस ग्रंथ के अब तक 16 से अधिक विभिन्न भाषाओं के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। आज ये घर घर में एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजित है। सब दायित्वों का निर्वाह करते हुए, सबको इतना कीमती समय देते हुए बाबा आपने इतने ग्रंथों की रचना की है। अब तो इस पर आश्चर्य भी नहीं होता है, क्योंकि आश्चर्य में अविश्वास छिपा होता है। ईश्वर ने मानवता पर अनुकंपा स्वरूप आपको इस महत् कर्म के लिए चुन लिया है। गुरु भागवत के छंद शब्द हैं। वर्षों पहले आपने बताया था कि दिव्य भाव जो आसमान या अदृश्य जगत में होते हैं, वे शब्द कहलाते हैं। इसीलिए गुरु भागवत का हर छंद दिव्य भाव से अभिभूत कर देता है, जैसा कि आप विभिन्न म्यूजिक एल्बम्स के द्वारा भी इसका अनुभव कर चुके होंगे। यह संगीत हृदय में गुरु और ईश्वर को एक कर देता है। बाबा, मैं आपके ही समक्ष आपकी ही कविता को उद्धृत करने का सुसाहस कर रही हूँ, क्योंकि इस कविता से आपकी अभिव्यंजना का भी रहस्योद्घाटन होता है। शब्द की बातें करते हैं ज्ञानी, शब्द का ध्यान करते हैं मुनि, सच्चा शब्द उसे ही समझो, गुरु मुख से निकली जो वाणी। गुरु विधाता का है देह रूप, सदा सत्य है गुरु की बानी, वाक्य उनका है आदेश प्रभु का, जो न समझे वो है अज्ञानी। लाते हैं गुरु आसमां से शब्द, भक्ति का बीज बोते हैं ज्ञानी, शब्द से सबको पास खींच कर पालते हैं सींच कर कृपा का पानी। और इसीलिए आज आप सबको बाबा ने यहाँ खींचा है, आप पर अनुकंपा करने के लिए। थैंक यू गुरु जी। तो हमने आपको बताया कि गुरु भागवत को 6 अलग अलग भाषाओं में एक एल्बम का रूप दिया गया है, म्यूजिक एल्बम का रूप दिया गया है। और अब मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगी कि गुरु भागवत हिंदी गायन का डिजिटल रिलीज करें। बाबा। आज का ये कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में बने सभी साईं मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। बाबा ने ये म्यूजिक एल्बम रिलीज किया है। इसको आप स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक समेत सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। हम आज साईं का आंगन में बैठे हैं। दिस इज नॉट ओनली अ टेम्पल बट एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। यहाँ बाबा के प्रशिक्षण और संरक्षण में कई बच्चे बड़े संगीत और संस्कृति का अभ्यास करते हैं। प्रस्तुत है इन्हीं में से कुछ बच्चों द्वारा गुरु भागवत गायन पर एक डांस। प्लीज वेलकम अहाना एंड ध्रुव।
श्री गुरु मेरे प्राण सदा पूजी चरण तेरे, प्राण सदा पूजी चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। देव श्री गुरु मेरे प्राण सदा पूजे चरण तेरे, प्राण सदा पूजे चरण तेरे। अन्यथा माया जो खेल करे, जग जंजाल मुझको घेरे। इस खेल में थक हार कर पुकारो, हे प्रभु रक्षा कर। रोग दुश्चिंता भवता दुख दारिद्र अनुताप, एक से दूजा है बलवान। नाथ के जीव को करे है, के जीव को करे है राम। देव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोजे चरण तेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। पल पल मन सागर में उठती है आक्रोश सी लहरें, हर एक चिंता लहर समान मन को करे अधीरा शांत। पंडित पास दौड़े रहे, दान व दक्षिणा देते रहे। मंदिर में सारे दुखिया जन व्याकुलित मन से करे क्रंदन, व्याकुलित मन से करे क्रंदन। देव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोजे चरण तेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। श्री गुरु भागवत का ये मधुर अंश आपने सुना। गुरुदेव ने गुरु भागवत हिंदी के पहले भाग की प्रथम 34 चौपाइयों को अनुवादित और संगीतबद्ध किया है। इसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं। गुरुदेव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोजे चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। श्री गुरु मेरे प्राण
सदा खोजे चरण तेरे, चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। अन्यथा माया जो खेल करे, जब जंजाल मुझको घेरे, इस खेल में थक हार कर पुकारूं, हे प्रभु रक्षा कर। रोग दुश्चिंता भवता दुख दारिद्र अनुताप, एक से दूजा हे बलवान, क्रोध के जीव को करे हैरान, क्रोध के जीव को करे हैरान। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे, चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। गंगा नहाते रखते व्रत, पूजन करते हैं विधिवत, सारा जीवन करते रहते, फिर भी दुख झेलते रहते। भक्तन के प्राण आधार, भक्त के कारण ये अवतार। संधि काल जब भक्त गाए, आपका शुरू हुए। गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। जब कभी हो निराश, ना जाने कहाँ से आते हो पास, हृदय में सींच कर भाव जल देते हो ज्ञान शक्ति बबन। जिस पे झरे आपका कृपा भाव, नैनन से आपके गुरुदेव, श्री हरि की दिव्य शक्ति, कृपा दृष्टि के संग बहती, कृपा दृष्टि के संग बहती। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। गायन को सुन सकते हैं। और अब हम अनुरोध करेंगे हमारे गुरुदेव श्री गुरु भागवत के रचयिता डॉक्टर सीवी सतपथी जी से आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द में।
Hello. Jai Shri Gurudev. Jai Shri Sai. Since we are online, welcome all here and welcome people in those 15 countries around. Especially here, our senior diplomats from Mauritius, Suriname, Netherlands, and UK for joining us in this cultural venture, which gives better understanding of each other. Understanding each other's culture is what Swami Vivekananda had said in 1893 in the Chicago World Conference. We must respect and accept the best of the culture of others. We must respect it, which is the best of other cultures, when maintaining our originality. A very loaded sentence, Swamiji had said, you are the first Indian saint or monk who went beyond the country for bridging the gaps between nations. I've spoken that at Washington, Seattle, and also Washington, D.C. about this. Today, we are celebrating. Why? Because today is a day, auspicious day for celebration of Guru Purnima. The word Guru is very heavy for Indians over the last 4,000-5,000 years. We attach a divinity to the word, a higher value to the word, to Guru, a teacher, than what we can add to the word called mentor, which is usually a teacher, specialized mentor. And today, as per the Hindu calendar, that is lunar, not is Guru Purnima, the full moon day in which over a few thousand years this day is being celebrated. In the name of an ancient Guru who almost created the first epical history, second epical history for Mahabharata, Vyasadeva. Therefore, this is named as Guru Purnima or Vyasa Purnima. It's very apt that all the secreted Puranas, Mahabharata, he was a part of the role played in the Mahabharata war. He is given the honor and following which we all are gathering to celebrate Guru. This word again, we have very big spiritual masters here. We had big institutions which taught in Takshila, BC. We had Buddha in the 6th century AD in Jaina. Preachers, religion part is separate. They're preachers basically, besides. They taught the humanity not in classrooms. They taught the society. And absolute good deliverables in the sense, what they taught converted the society. When we are saying a guru, we are not meeting a class teacher on paid salary or a tuition fees. We mean by guru who can change the inner minds, even social orders. That's our. This is number two. Earlier times, so 3,000 years, 2,000 years, kids used to go at about the age of 5 or 7 to the Gurukula ashram and stay there till the age of 16 or something, and learn anything and everything from the master who was like God to them. They taught everything. Even the parents would do nothing at the time. There's a complete, comprehensive, totality, holistic education system. The word is coming from there. Now, with the process of time, this has been diluted because today they are hostels. You don't know the Gurukula ashramas.
You could name it very properly, reflecting your ancient deity. Good. So this book is Guru Bhagwat. In this context, Shri Guru Bhagwat means, what is Bhagwat? Bhagwat is one of the Puranas, of all Hindu scriptures. That gives the epic of Bharat, like Homer and Iliad in other countries, somewhere like Spartan and the Roman wars, you can see. But ours is Ramayana Mahabharata. What is said, what is heard, what is remembered by hearing, not written. When written was not there, there was written on the tablets, but they trained people to remember memory. That was so that it's not destroyed. Even if somebody attacks and analyzes, like Tashila, our university was analyzed. It's a big Saranath again. One of the conquerors too is annihilate the culture. One of the best things is that, like Alexandria, they killed the library itself. So Guru Bhagwat, in short, is the character of a guru or a teacher, not only for Hinduism, not only for the teacher, it is for universal standards of the world. What it should be. What is the universal standard? What should we expect? Let us say, in foreign countries also, let us say, why do they have this divine part of it? What is the best teacher exactly? I was seeing the video at Harvard University or Washington University. What the teachers do, how do they teach? How much they give to life? They may not be teaching divinity. The professor of philosophy did not teach divinity. But what they give exactly, how much commitment is the thing? Imagine some teacher. Now, let me make first one differentiation which people will. When you're talking of a spiritual guru, and when you are talking guru of the modern times, we are different of spiritualism, which is absolutely wrong. You cannot see a society with science is ruled by some divinity and spiritualism is some divinity, temples run by somebody, NASA run by somebody. That's wrong. It is totality of energy form working to various methods. We have done yoga, we did yajna. Today, God is revealing more through science. Because anything I'm telling you, anything you're hearing, science, why don't you admit that today we are saving because of medicine? Why don't you let the human beings at all? So, this is Guru Bhagwat. While apotheosizing the characters of a guru, of the ancient deity, is also trying to bring out the changes that are necessary in approach to something. Yeah. Shortly before this, I had beautiful experiences of having one in Bhojpuri language. Bhojpuri is a side language. It's a Bihari language. It's very popular. And for your information, I think 19th century, 18th, 17th or something, people went to Mauritius, Suriname, and many 3-4 countries, Fiji Island, and somewhere else also. They stayed there. I think Suriname is a very popular language. People know. So once you know Bhojpuri, Hindi is known. And because of national language, 50 crore people knows in the states and the rest of the India knows. Supposed to national language. So when I am doing this, I've released recently, I think Bengali something, and then I put Kerala book that you hear it written. All other language, 1980 language, I know so much here and anyway. Yes. The first Guru Bhagwat book was published, he just told you. But for me, the first exposition of Guru Bhagwat was at Seattle, in the radio, for about 2-3 years. Devdutt Das, if you are in Seattle sitting, I'm sure you were there. You did that job. Well, good job. Then we went to, it is Australia and New Zealand, and I think some places in Europe. I think Africa. Anything that is human, a common concern of an individual, will touch everyone. A mother rearing a child is common anywhere in the world.
that mother-child difference in birth will not be different in any religion, any culture, any cannot be. The fundamental principles of growth and survival, sustenance. And what is for a society best? What do we live on? Society, country, nation, culture, music, literature, they are all combined. You cannot separate them. Our forefathers gave it. We are carrying it forward. When it changes for the necessities of time, of course we have to. I cannot start a didactic poetry here like Chaucer and Dryden, and that cannot happen because you don't understand that. Not even Shri and things. That they are very beautiful literature. I have books of 1700 something, handmade written from Foils Company, handwritten books. So, पंचगुरु से बात कर रहा हूं मैं, हमारे सम्मानित अतिथि को परिचित करते हुए, ये एक प्रेरणादायक First, don't go for blind faith. Clean your mind of certain blind faith you have. One. Number two is be grateful to the growth and evolution of a society, including culture and of course the parents. My presumption is Indian society and allied Indian society survived because of the family faith. We are proud of it and we are sure of its strength. Little change is coming further. Still there, it is very much there. Even in this country in which when Mauritius speaking on this country. Here was what I've written. Surprisingly, I've written a prayer for the parents, not God. We have written enough for parents, but they are the agent for giving birth life. If we neglect them, how do you learn how to be grateful to anybody in this earth? The highest level, minimum thing is parents. And if you haven't learned how to be grateful and hold their hands in old age, then what sort of a gratefulness and quality can you have tomorrow? That is just how is it testing down even of the quality of we pray bosses, we pray heroes, we pray why not? Second, how about the society gather? In India, it is possible. Let me tell you one thing. And third thing is futuristic change. I've said the children should be given enough of opening for adapting to the futuristic change because my generation doesn't know much of things, cannot say we are stopped. Rather than have said, our generation have to exchange program with our own children. We tell them what is simple, let them tell us what is complicated. We don't know. I'm telling you, this generation due to have adult education, certain what is fast changing so fast to catch up to it. You have to learn yourself to guide your children. That's my clear cut understanding. Where did we falter? Yes, we did falter. Because when computers came, cell phone we gave to the children. Suppose I get equipment. My generation created science. I'm 76 plus. My later generations could be. Then I get the equipment and give it to the child. I don't know how to operate it. I don't know what can be the negative use of it. Then when child uses it, it is the entire world living. That's ridiculous. If I give a thing, I must know what is right and wrong and learn it myself and guide it. I don't know. I presume everything must be or A or not A, not A, because I don't know what's possible. So how to adjust the families and society will come changes. Like for example, this corona, what happened in India? We had much less deaths. Why? Just
Well, I've written in that all this. That is because the moment Corona came, government declared we all went into our houses. Houses there. Child, mother, child, everybody did the homework. And nobody took food outside. Like morning breakfast there and everything. Some hotel there and called handshake and had your food. In those countries, that was not possible. We managed to do everything to do, just control. Puja, Path, everything. Where they were compulsory to go out, they didn't have the system, they got into trouble. I mean, not on that. No offenses made, but that's what our family gave. And also got the adjustment between parents and the children very sweetly to face disaster. How to face disaster of the family. That's one issue. Also, every religion lives, every society needs some people to lead. You call it a guru, a leader, anything, any epithet you use doesn't contradict the requirement of a society of a leader. That is always absolutely. A leader is a necessity, and that leader you can call guru because he leads the society not only in the rational world, sometimes in the physical world, sometimes the emotional world. And some of them actually, in leading the society, bringing those change, were hanged like Rajesh or Gandhi. Those who get changed sometimes get hanged. They take upon themselves the price of a change. Martin Luther King, I'm going there, I'll be there. 7 days later. So that is what is. So Guru Bhagwat is even a realistic approach for today's society and children. यही इसका कार्यक्रम है और कुछ नहीं, इसको पढ़ेंगे संगीत के साथ अच्छा लगेगा. हमारे तीनों बच्चों ने बड़े अच्छे गाए हैं, 5 को हम लोग सम्मानित भी इनको करेंगे. और हमारे यहाँ का एक परिवार जैसे संस्था है, परिवार में कोई किसको एक प्राइस दावी नहीं करता है, सब एक दूसरे के सहयोग के साथ मिलजुल कर इसको एक समरस से, समभावना से इसको सफल करते हैं. यहाँ पर बैठते हुए मुझे आज 23 साल पहले जब मैं शुरू किया था कार्यक्रम लिखने का, क्योंकि सारे भाषा आप देखेंगे गुरु भागवत टू भी बन गया. व्हाट इज टू बी ए बिल्डिंग्स प्लेसेस only deployed, only created organizations only for in Seattle. We are getting it Bay Island. We're going to be in Wallace, many places. That is always there. India is full of it. How does it come? Why do people? We don't go for any advertisement. Sorry, I'm not believing. And I'm not believing in taking any foreign dollar for your advertisement. For any, no help is necessary. Our people is 5 rupees will do. No help, foreign help is necessary for out in my life. No. If they are not competent to build their own structure with 5 million and depend on some aid, then they cannot do. That's not a business or a corporate sector, common sector. This human sector or emotional sector. That's what is also told. Very clear. So, इसीलिए मैं आप सब जो लोग देख रहे हैं, मैं इसे करूँगा. ठीक है, अब तो देश में फंडरेसिंग हो सकता है, हमें आवश्यकता है नहीं. यहाँ पर भावना की आवश्यकता है, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा. और हम लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ दिखाता है कि आप अगर if you don't create, I have written there, we create certain burden on ourselves. If you are out of that burden, Guru Bhagwat says, you are much better. Who is a guru? Who is the character of a book? Let us say the book becomes a guru, because in Sikhism, when Guru Gobind went away, the book became the 11th guru. Then it says we don't want a human physical guru. So the books teach us much more. As I say, we have our epics. Our epics are our gurus, already books are there. Ramayana and Mahabharata, we learn from that. So it is better to understand. And let me tell you, I think I have a session at Chicago on this issue. I'm going for issue on the 7th or 8th. Anywhere in the world, like a mother and child, relations is a constant anywhere. So a teacher and student has a constant relationship. Little change with time, where you add a little support and hold hands. When you learn from the student to hold his hand properly.
That is all that I have to. Thank you very much. I'm delighted you are all here. मैं बड़ी खुशी हुआ कि आप लोग सब यहीं पर मौजूद हैं, विदेश में जो लोग देख रहे हैं. हाँ? ठीक है. Online सारे मंदिर, it reminds me how many people are seeing or whatever they see. मैं सब लोगों को भारत और भारत बाहर में जहां पर आप लोग देख रहे हैं सैकड़ों सैकड़ों संख्या से I don't know what number. धन्यवाद दे रहा हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने सम्मिलित होकर दूर दूरांत में समय निकालकर, टाइम जोन भी अलग अलग है फॉरेन कंट्रीज में, उसको पार करके जो इस इवेंट में आप लोग सम्मिलित हुए, आपका सम्मिलित होना ही हमारे लिए प्रोत्साहजनक है. It is inspirational and gives us support to the cause for which you are standing, because that cause is for generations, that cause is for children. If the children don't learn these things today, in the fast changing economy, or fast changing world system, then there will be no guru. The gurus will fail and the students will go their way. They don't blame them with this word. Thank you, Aussie, and thank you all of you. Nandita, thank you to singer, dancer, all those who gave me something. Anybody, जो काम किया है, small or big, I don't know who I can name it. There are too many of them. It's a family, so told or not told, anybody who has laid a hand. Thank you very much, and thank you all. You have a cause and we shall be your cause, cultural cause. And our very senior ISIPS officers are there, Government of India, and businessmen, all sort of, a few doctors who will not. So that's not the issue. Issue is a cause and acceptance of a cause, working for a cause, and getting into excellence, and leading others. Thank you. Jai Shri Sai, Jai Shri Gurudev. That was a short event, but a very powerful one because of the informational messages you got from Guruji. And I don't know about you all, but I noticed something, and that's how gurus work. Since today is Guru Purnima, I know many of you would love to see your spiritual guru. And that's the smartest way he came and inaugurate the digital release this day. So many of millions of his devotees could see him. So a big round of applause for Guru Shri Satpatiji. I would like to invite now Santanu to come and talk a little bit about the event that happened in Delhi and about Sai American Foundation. Jai Shri Sai, Jai Shri Gurudev, Jai Shri Guru Bhagwat. Many people are new, but they know about Guruji, they know about Guru Bhagwat, they know about Sai American Foundation. But I'll just give a brief history. The whole movement started by Guruji, Dr. C.V. Satpathy, when he came here to Texas in 2011. And that's when Sai American Foundation was built right here in Plano, under the aegis of Guruji, by Mr. Vishwaranjan Jena and Mrs. Mosmi Jena, who are right now in India. So they built this. They were a part of a big movement here in the United States. There were many organizations, many places we have held events, from Seattle, Houston, and that's how Guruji was introduced to the lot of the US crowd here. He had started his journey back in the US, I think around 10 years before that, in Chicago. And Guruji is coming again, fortunately for us, again next week to Chicago to attend OSA. So we are all, some of us will be there to meet him and greet him and take his blessings. So that is a little bit about Sai American Foundation on the history. So there are many people associated with organizing events. Not many people know, but we have Guru Bhagwat sessions. We read Guru Bhagwat. Every week we release
episode of Guru Bhagwat sung by people right here in this room, like Kailas Bhai is here, Debashree is here. The music was composed by locally for that album by another piano player here, Miss Waran. And that's how we are into, I think, 60 or 70 episodes of Guru Bhagwat released from here. We have been holding Guru Bhagwat reading sessions from Sai American Foundation. Many people know us. People from Canada join, and we will continue such events. So I think primarily what Guruji said, what is the cause? That's what I understand from this. What is the cause, right? When you listen to song, you enjoy it. If you don't like it, then why would you listen? What is the value in it, right? So the past of history of thousands of years, traditions and whatever religion or culture, whatever you call, that gives us the identity that who we are today, right? That is important. How we are using it is very important today. There is a reason why you all are here. You could be doing something else, right? Why you are here, that is also important. I think the most important part of that is how are we going to hand over this to the next generation? Like kids, if there is no value on it, then this should not have survived for thousands of years. Because there is value, so I think it's our responsibility to also pass that on to the next generation and how we do it. Why this release album of this release is important is because all little kids who grew up in Sai Kangans here in Gurgaon, their parents came to Guruji. He nurtured them in music, art, sports. 3 of these kids became and sang this song. Guruji's past albums were sung by many famous singers, from Kailash Kher to you name it, from Sadhana Sargam, Suresh Wadekar, you name it, you have it. But why this is important? Because of the kids. 3 kids did it on their own. Complete Hindi, first time Hindi release of the book. By the way, the book was originally written by Odia, so it's a matter of pride for all of 34,000 lines. Navakhyari Chandara, 34,000 lines. It's a humongous work. Okay, now listening to the word Bhagwat, many people run away because they think, Bhagwat, Guru Bhagwat, and Bhagavad Gita, not applicable for me. It is for temple. You will be fascinated to know that this book has a section for how to raise your kids. There is a section of what is the importance of education in today's world, contemporary world, 2020. What is the responsibility of a parent? What is the role of to all of us right here? That you won't find in any other Puran or epic. That is very contemporary. Even COVID is also mentioned in this Bhagavad. So that is why it is important. But how do we nurture this? It's just that one event, fine. If we can connect, we read, we nurture this, we will get something out of it. We learn every single day. And that is what the purpose of this event is. To come together, very few people I know, but this few can become more. But numbers doesn't matter here. Is that if you get the essence of it, you get the value of it, then you will see why we are here, right? Many people are here. I won't speak long because Hari Kathan gonna end. 34,000 lines already written by Guruji. But with that, there's a little bit of Sai American Foundation about who we are, what we do. We want to connect. We want to do more. Okay, we want to get involved. And with that, we will continue with the program, Sunil. And we have more programs here, beautiful songs and bhajans people have prepared. And they will introduce themselves. They will come, enjoy. We'll have good dinner after that. And then we can go home and think about it. With that, thank you for attending, coming to this evening. I know it's a long weekend. We are really thankful on behalf of the organizers here and people who have participated to make this happen. Thank you, Santanu. That was really informational. If any of you would like to join the Sai American Foundation, you can be in touch with Sunil or Santanu.
Now I'll invite our guest of honors, Hari Bhaina, Jagannath Bhaina, Chitrayani, and Rajiv Mainiji to come and release the Hindi Gayan right here. I know everybody knows about Jagannath Bhaina and Hari Bhaina. I just want to say a single line that they are the community here. They are the people that binds us, and like any guru, we get experience, and that's what they have, experience and keeping a community together. So thank you, Bhaina. Rajiv Mainiji. Rajiv Mainiji is now more of a Odia, so any chance he gets, he runs to Jagannath. Yeah, Jai Jagannath. There he is. Now he's more of a Odia, so welcome Rajiv Mainiji. Careful, careful. एक संगे खोलेंगे. We'll open it together. एक साथ. Odia? नहीं, बहुत ही अच्छा है फिर. अभी I'll start talking in Odia then. एबे समस्ते एका संगे खोलिबा, release करिबा. Please give a round of applause. So it's officially inaugurated here in Dallas, Texas today. Thank you to our guest of honors. Thank you. Yes, you are very much a Odia now. Welcome to Odia Brotherhood. He's getting much closer to Jagan. Make sure that you talk about us when you are talking to Jagannath ji. So we all are here as a community and happy community. If we have more time, I'll definitely let you say. Now, I'm going to invite Kala Sau. Everybody knows him, so he really doesn't need an introduction. He's going to sing Guru Bhagwat.
हेलो हेलो जय जगन्नाथ जय श्री साई हेलो हे गुरुदेव गुरुदेव तमे भावमु जे अभाव अभाव मोर दिय भरी मोते निजर निह करू मो देह हेउ तुम गृह तो नामे मो मन हेउ तुम मन मो इच्छा कारण मो हाथ तुम हाथ हेउ मो कर्म तुम कर्म हेउ मु चालुथिले तुमे चाल मो मुख देई तुमे बोल मु खाए जहा खाओ तुमे मु सुए जदि सुअ तुमे मु हेले दुष्ट हुअ रुष्ट मु तुष्ट हेले हुअ तुष्ट मो पुण्य हेउ तुम पुण्य पाप कुटिकर ग्रहण जाकिछि अछि मो निजर ग्रहण कर गुरुवर श्री गुरुदेव गुरुवर नाति मोर सदा मो मथा नई थाऊ चरण तले पड़ी थाऊ पूर्व जन्मर पुण्य फली दास हेबार भाग्य हे दिन उठा प्रणनाथ दास कुटिय दिव्य पथ दास कुटिय दिव्य पथ दास कुटिय दिव्य पथ. Thank you. Those lines were really very powerful. That's what I felt. And chorus, ତମେ ବହୁତ ଭାବର ସହିତ ଗାଇଲ, so ଧନ୍ୟବାଦ. ଏବେ ଦେବଶ୍ରୀ ଗାଇବ ଗୁରୁ ଭାଗବତ.
जय श्री साई, जय श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेवा गुरुदेवा प्रणाम खोजे पद तब तुम श्री मायार ध्यान रे एकाग्रता गुरुଙ୍କ पासे गला बेले भगत बसे माया खेणे माया उगाड़े पथ तार विलंब करे बारंबार श्री गुरु भक्त को डाकंती संदेश पठाई थाती स्वप्नरे दियन्ति इंगित व्याकुल हुई भगत श्री गुरुଙ୍କ पासे जीवारी अन्यको जे साहाय्य करे से अटे असली भगत भगति जाहार निस्वार्थ प्रकृति बाधा दिए जेते सहन शक्ति बढ़े देते ही जे भक्ति परीक्षा भक्त चरित्रर समीक्षा देले गुरुवर सेवा करन्ति चरणर श्री गुरुपद महातीर्थ भगत पाई पुण्य क्षेत्र गुरुपादरु झरे शक्ति पाद स्पर्शरे जागे भक्ति सेवा करी गुरु चरण मनस होई पावन देवाकु मोर किछि नाही सबु तुमर भावग्राही कृपा भरे कले ग्रहण कृतार्थ हेब मो जीवन तमर जे असंख्य भक्त धनी मानियो शक्तिवंत तथापि व्याकुल मो मन सेविबाकु तुम चरण जय श्री साई, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भगवत। थैंक यू देवश्री मंत्रमुग्ध करदेलु खूब सुंदर गाइलु नाउ आई विल कलश शर्मा टू सिंग ए गुरु भजन
जय जगन्नाथ, जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत. This Geet is written by Guruji, Dr. C.V. Satpathy ji, composed by him. It is a blessing that we all are here together, and I'm singing this. It's all the blessings. We take it as blessings to be able to be here, sing it. I may make some mistakes, but our attempt to sing Guruji's bhajan and Guruji's Geet is what we can try best. आखिर में तुझे पुकारे, माटी रे आखिर में तुझे पुकारे. माटी से आया है तू, माटी में जिएगा, माटी में सोएगा, माटी में मिलेगा. माटी से आया है तू, माटी में जिएगा, माटी में मिलेगा. माटी होगा जीवन क्यों सोचता नहीं रे, माटी होगा जीवन क्यों सोचता नहीं रे. माटी रे आखिर में तुझे पुकारे. गुरु तेरा माटी नहीं, गुरु तू आकाश है, गुरु तेरा जीवन है, गुरु तो अपना ही है. माटी नहीं, गुरु तू आकाश है, गुरु तेरा जीवन है, गुरु तो अपना ही है. क्यों न ढूंढे उनको जो प्यार से बुलाए हो, क्यों न ढूंढे उनको जो प्यार से बुलाए. माटी रे आखिर में तुझे बुलाए. माटी के ये रिश्ते सारे नाम धन घर सारे पीछे रह जाएंगे. माटी के ये रिश्ते सारे सब छूट जाएंगे. नाम धन घर सारे पीछे रह जाएंगे. तेरे जन्मों के साथी गुरु को पुकारे रे, तेरे जन्मों के साथी गुरु को पुकारे. साईं रे साईं रे साईं रे साईं रे. थैंक यू. Who felt emotional after listening to the lyrics? We know where we came from and we know where we are going to go to. So in between that journey, life should be lived happily. And if you today have a grudge on someone, today forgive them after listening to this. Again, please give a big round of applause for Sarmaji. Next, I would like to invite Sukant Bhai, Sukant Bhai Singh, to sing Gita Govinda, Dasavatara. And when Kailas was singing, I completely forgot to say that who was on harmonium. That's my mistake. Apologies.
चेक कर रहा है सामने। हेलो 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 साउंड क्लियर से ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଦଶାବତାର ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି କବି ମହାକବି ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଗ ମାଳବ ଗୌଡ଼ା ଆଉ ତାଳ ଏକତାଳି। ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री Vanasi Vedam Vita Bahitra Charitrama Sabadrita Vinasarira Jaya Jagadish Hare 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 Jaya Jagadish Hare Shrutirati Vipulatare Tavatishthati Dushte Dharani Dharanakina Chakragarishte Sabadrita Kachaparupa Jaya Jagadish Hare 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 Jaya Jagadish
सहरे बसती दासन शिखरे धरणी तव लग्ना लंका काले बानी मग्ना केशवधृता सुकरारूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे दलितैरण्यकाशीपूतानो भृङ्गं केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामना पदनखनीरा जानिता जन पावन केशवधृता वामनारूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं स्नपयसि पायसि समिता भवतापं केशवधृता भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे गीतरसि दीक्षुराणे दशमुखमौलिबालिरामाणि केशवधृता श्रीराम सवीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे शिव पूषि विशदे वसनं जलदाभं हलहति भीति मिलितायमुनाभं केशवधृता फलधर रूप
जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे निंदासी जाज्ञा विदेर श्रुति जातं सदाय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छानि वाहनि धने कलयसि कलमालम् धूमकेतुमिव किमपि कराळम् केशवधृता कल्की शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे श्री जय देव कबीर गीतमुदारम् सुशुभदं सुखदं भवसारम् केशवधृता दशविधरूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगन्नाथ थैंक यू the song. जयदेव होचंती ओडिशार 16th century र कवि तांकर सबु लेखा कृष्ण आ राधांकर संपर्क को लेकिना किंतु सुकांत भाई जी गाइले 10 अवतार बहुत बहुत सुंदर गाइले सो प्लीज अगेन a round of applause for Sukant bhai. Now I'm going to invite again Karla Sao for another bhajan, Sai bhajan. hello 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 hello
Hello. It's a filmy Sai version, so bit upbeat, yes. And Jai Shri Sai, let me play this. जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। बाबा शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। मेरे साईं बाबा तेरे सब नाम लेवा, जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे। सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी, बड़ा या कोई छोटा मायूस लौटा। अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा, तेरी रहमत का हिसाब या अकबर करे क्या। दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल कांटे तू सबका मालिक है। हाँ हो खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं, चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत हैं थोड़े। ये हर राही की मंजिल, ये हर कश्ती का साहिल, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। तू बिछड़ों को मिलाए, तुझे दीपक जलाए।
की रातें रातें ये काली, इनको बना दे ईद और दिवाली। लब पे दुआएं आंखों में दिल में उम्मीद। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। Thank you, thank you, thank you. Film wasn't Chorus, that was mind-blowing. Only one and only chorus can only sing like that and engaging with the audience too. So thank you, chorus. And now we are going to invite the better half of Mr. Chorus South, please. Thank you, Pachi. Jai Jagannath. Jai Sai. बंधु सखा तुम हो। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम। बंधु सखा तुम्ही हो। सुख सकीना तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। सुख सकीना
फूल हम चरणों के फूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना। वो बंधु Shri Sai. That was an apt bhajan for the evening. Thank you, Thampi. Let's give another big round of applause for both Kailas and Thampi. They always rock our Dallas with all their performances. Thank you again. Our last singer, solo singer for the evening is Debashree, and is going to sing a bhajan written by Dr. Guru Shri Satpathy ji. This bhajan is written and composed by Guruji. कृपा बिना प्रभु हमें की करीबु, तुम पाद छड़ी आओ ता पाद धरी। तुम पाद धरीबु। भगति आओ ज्ञान जीवन सरीब बाट आमे तो जाणीनु न जाणु केयो जगरे केबे सोई जीवु केबे सोई जीवु। तुम कृपा बिना प्रभु हमें के करीबु, तुम पाद छड़ी आओ ता पाद धरीबु। कड़ा खुंज पढ़ेर परिया में नाचो, दुनियार हाथे नाची नाची गीत गाओ। हमें जी निमित तुम्हें करो अच्छा सब, तुम कृपा बिना
तुम कृपा बिना प्रभु हमें की करीबू तुम पाद छड़ियाओ का पाद धरीबू तुम कृपा बिना प्रभु हमें की करीबू तुम पाद छड़ियाओ का पाद धरीबू तुम पाद छड़ियाओ का पाद धरीबू का पाद धरीबू का पाद धरीबू। Yes, Shri. खूब सुंदर देवश्री, खूब सुंदर गाइलु। थैंक यू। अबे देवश्री ପାଇଁ भी ଗୋଟେ round of applause. Now it's my absolute pleasure to invite our guest of honor on the stage. जगन्नाथ भाईना, चित्रा नानी, हरि भाईना, पुणी राजीव माइनी जी गायब। से पुणी जगन्नाथ आड़ को टाणी है कि पड़े लेनी। आसंद भाईना। It's our chief guest for tonight. राजीव माइनी पुणी चली गलानी कुआड़े। सुकुमार गोटे मैसेज पकाओ राजीव माइनी बाबा को। से कुआड़े गले आसीबे ना आसीबेनी तांकर एका भाव आ लगान होची जगन्नाथ पाई से कुआड़े फुसकिना पड़ौछंत। जेतु से आसी नांती हमें हरि भाईना, चित्रा नानी और जगन्नाथ भाईना का संगे स्टार्ट करियो। राजीव माइनी पर्यंत he is not coming. Okay, ठीक अछि। एबे हमर गेस्ट ऑफ ऑनर को हमें ऑनर करबा आउ जया, पिंकी आ स्मिता एबे हमर तीन जण गेस्ट को ऑनर करिवे। शांतनु उत्तरी पकई के सम्मान देवे। Thank you, Hari Vaina, for always keeping the community together. ताली मारी चली था तो अब बंद है परिवारी। एवे जगन्नाथ भाईना को शांतनु उत्तरी पके के सम्मान दउछंती। So जगन्नाथ भाईना और चित्रा नानी को पाई गोटे जोरे ताली। भाईना, thank you always for your humor and always for loving us, all your juniors. Thank you, Nani and Vaina. আমার ডালাস बहुत गर्वित Manas, thank you so much for the picture. धीरे आसो। Thank you, Vaina, so much. हरि भाईना आपण के बे सेटा रखी कि पुणी आसिया को पड़िबो। हमर आजिर जो माने गीत गाइचंती तांको सम्मान करेबा पई। So I would request Kalasau, Thampi Sau, Debasri Sharma ji, Sukant भाईना, Sukant बलियार सिंह, please. आपण मना जी बहुत बहुत सुंदर भजन सब गाइले।
देवश्री थम्पी से भी स्टेज ऊपर चलत ऊपर हाँ अरे आज पावरफुल परफॉर्मेंस सब आपण मान गुरु पूर्णिमा फेल्ट लाइक गुरु पूर्णिमा इन ट्रू सेंस पिंकी और स्मिता नहीं क्या हाँ हरि भाई ना आसतु एथर आपण माने सम्मान करिवे हमर ई सुंदर गायक गायिका मानन को बढ़े दे भाईना को जन जन को दबा पे ओके बे खूब जोर गोटे ताली कलास और थम्पिंग पाई थैंक यू सुकांत भाईना थैंक यू जी थैंक यू देवश्री आज आम समस्त गायक गायिका पूरा बहुत बहुत जोरे गोटे ताली पुणी दिंतु धीरे धीरे थैंक यू भाईना थैंक यू आप एक्चुअली हरि भाईना आप बसी पारे पुणी मुझे डाक पुणी हसवे आपन को दीपद आपन को आज आसिक दीपद डॉक्टर शतपथी विषय कहवाक हम आपण आउ जगन्नाथ भाईना डिसाइड कर दियंतु और दी जण आसंतु गोटे गोटे मिनिट पई कहि कि जिवे कारण भोक लागिलानी हम लोकन को गुरु चंद्रभानु शतपथी की नमस्कार साई देव नमस्कार इट्स ए वेरी auspicious occasion Guru Purnima तेणु समस्ते गुरु comes in very different forms I think I saw some तेणु यही occasion रे मैं तांको felicitate करूचे in the process we also uplift ourselves and तेणु आउ बेसी किछि तो मु कहि परिबिनी हमर संपर्क गुरुदेव के संगे बहुत भलो तेणु बर्तमान मो पात्र बाबू आपण मोठू बेसी जानिचंती आपण कति पद कहिबे भाईना नमस्कार प्राची थैंक यू first of all I like to thank each and every one of you so well done so all the volunteers all the artists starting from Prachi MC and everything else you all did an excellent job thank you one experience I really like to share with you when I went first time to Shri I really wanted to go and see what is because I did not know until Dr. Satapathy Guruji attended came here to then I wanted to go and see Shri what is that I have never got a chance to do that one or got a feeling for it, right? And when I went there, yes, we went to Bhubaneswar, to Bombay, to car, taxi, to Shirdi. I went to the hotel, stayed there. There was a little store there, little
store right in front of the hotel. I went there, and there are so many books are there. Before I went to, I visited the temple and all that. Then, see, first of all, I know who is Guruji. I did not have to say anything to the store owner, and they're all, sitting there, our owner or whatever. I said, can you please tell me, I'm looking for a good book, best book of Shri. Please suggest me. Guess what? He did offer Dr. Guruji's book. I was so much impressed, so much stunned. Let me tell you, I changed my things completely. But so many stories must be, but I like to thank each and everyone for your time, giving me the time. Thank you. Thank you, Harivaina. Thank you, Jagannath Vaina. That was a wonderful story, Vaina. Your experience. Now I would like to call to do the vote of thanks. Jai Shri Sai, Jai Shri Gurudev. In this auspicious day of Sri Guru Purnima, let's first thanks to our parents, who is our first Guru, due to who we are standing here today, right? Then pray at their lotus feet, Sri Jagannath, who is the Jagat Guru, Sri Sai, our beloved Guruji, and other divine masters you follow, and due to their grace we are here today. I will speak a little bit about Sri Guru Bhagwat. Mentioned it may be a spiritual book. You may think that it is a very complex one, but it has an aspect for everyone in Sri Guru Bhagwat, right? So generally two things we need in the life to move in the spiritual path. One is the devotion, another is the knowledge. Generally, devotion creates the knowledge automatically. Like whether it is Ramana Maharshi or anyone, right? They didn't have knowledge. The devotion, actually they got the knowledge due to the devotion. Second thing is that if you get the knowledge and that knowledge progress you to the devotion, that's also best thing. But knowledge should not never, none of the intellects has become success in spiritual path. It's never. Okay. So when we talk about Sri Guru Bhagwat here, these epic volumes of something is for everyone, like I told. For a singer, it is a soulful devotional songs. Several prayers are there. You can pick and sing. It will really give you goosebumps. For a literature, it's a literature. You see in the Navakhyari Sandhi, who can write so much? It's an epic literature. So you should be proud as a Odia or Indian by having those books. Okay. Then for the society, it is a culture and history. Several culture is written in Sri Guru Bhagwat. It's written about history like our Panchasakha, which probably Prachi is one of the devotee of one of the Guru. It's written about Bas. It's written about why you should chant Gayatri Mantra, why you are praying Shiva, why you are praying Vishnu, what is your Gotra, why it is there. So all those things are written there. So that would give you deep knowledge why you are doing. When you are pouring a milk on the Sivalinga, you may be seeing in the film kind of those stuff, right? But if you are doing with bhava, there is a meaning for it. So Sri Guru Bhagwat explains about that, why you are doing. Okay. Then for the children, it's a ethics. So we just heard about Guruji speaking about how you grow your children, right? So it's ethics. And for a devotee like us, it's everything. It's everything. Okay. So
like Sri Krishna is not there today, means he is there in a different form. But Gita is our book. When we are not near our Guruji, Guru Bhagavad, Sri Guru Bhagavad is our Guru. Okay. So with that, there are a lot of books here. Please browse. And if you like any book, contact us. We should be able to arrange a book for you. Okay, with that, thank you to all generous gathering for this auspicious day. Thank you to guest of honor, all our Bhainas. Why we are in a far land, still our culture is alive, right? And I think the next generation should, it's a lesson for the next generation also, right? We should carry it. For managing this so well. I think you are going to host all of our events going forward. So it's booked. So with that, let's give a little bit of praise to Prachi. Bhaina, if you can do a little bit of honor to Prachi. Basically, Sunil is trying to tell Prachi, so she cannot take any vacation. Thank you. With that, we'll close the celebration for today, but we'll have Sri Guru Bhajan. We have the dinner, which is another Brahma, right? Written in Sri Sai Satcharit, right? That's the ultimate Brahma we should never neglect, right? So we'll have a dinner, and then some bhajans we would do in parallel. With that, let's close the ceremony. Jai Jagannath, Jai Sri Sai. Bow at all the lotus feet of all those gurus for whom we are here. Thank you. Thank you for giving me this honor. As most of you don't know, my guru is Panchasakha Achyutananda Das. I've learned a lot from him. So today I want to bow down in front of my guru for giving me this opportunity on Guru Purnima to come and talk about Guru and listening to these wonderful people say things about Guru and watching Guru Satpathy ji. So thank you. Thanks. Food will be served there, but I would love for all of you to bring your food here because we have one more last thing. It's a group bhajan. So if you can bring your food and sit here and just listen to the bhajan, those who have practiced in these past 2-3 days will feel really obliged for that. Dhanyavad.
I can keep something on the way. Yeah, I'll check it. Find a place. They can श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। अन्यथा माया जो खेल करे,
जग जंजाल मुझको घेरे, इस खेल में थक हार कर पुकारो हे प्रभु रक्षा कर। रोग दुश्चिंता भवता दुख दारिद्र आनो क्रोध की जीव करे हैरान। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। पल पल मन सागर हर एक चिंता लहर समान, मन को करे अधीराशा। पंडित पास दौड़े रहे, दान व दक्षिणा देते रहे। मंदिर में सारे दुखिया जन, व्याकुलित मन से करे क्रंदन, व्याकुलित मन से करे क्रंदन। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। गंगा नहा के रखती व्रत, पूजन करती है विधिवत। सारा जीवन करते रहते, फिर भी दुख झेलते रहते। प्राण आधार भक्त के कारण ये अवतार। संधि काल जब भक्त गाए, कृपा खेल आपका शुरू हुए। कृपा खेल आपका शुरू हुए। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। भक्त जब कभी हो निराश, ना जाने कहाँ से आते हो पास। हृदय में सींच कर भाव जल, देते हो ज्ञान शक्ति व बल। जिस पे झरे आपका कृपा भाव, नैनन से आपके गुरुदेव। श्री हरि की दिव्य शक्ति, कृपा दृष्टि के संग बहते। कृपा दृष्टि के संग बहते। सदा खोजे जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। कृपा तुम्हारी हो जिस पर, शक्तियाँ बने
चले शक्तियाँ पंच तत्व माने तुम्हारी आज्ञा, जैसी इच्छा गुरु आपकी, वैसी गागन की जल माटी हो या तो आकाश, पंचभूतन है तेरे ही दास, पंचभूतन है तेरे ही दास। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे, चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। हे गुरु सखा भाई माता, हे मेरे हेलो हेलो आउटिंग हेलो हेलो এটা म्यूजिक ना। हाँ हेलो हेलो समस्ते कि अछंदी आउ कि रहले आमे आउ कि रहले 3 4 स्मिता एट अछंदी ना। अच्छा हु एल्स पिंकी पिंकी जॉइन करियो ना। हाँ पिंकी इज कमिंग एंड हु एल्स ओके रहले ती तो मानस मानस अच्छा देवश्री ओके जयलक्ष्मी गीता हेलो 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 वॉल्यूम पे आउट करना चेक चेक हेलो 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 चेक हाँ चेक चेक आउटे माइक अच्छी जगह ए मोर मोर एडे गोटे पार्टी जे माइक दरकार ओके बढ़िया कर एमि चश्मा आनी तो जानो ओके चले हम पर्सर अछि ना हेलो 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 ठीक है श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण मो खोजे पाद तब तुम श्री एकाग्रता से मनरे अन्यथा माया राजी खेल घेराई जगत जंजाल से माया खेली हारी हारी डाके मो जीव रख हरी भोग दुश्चिंता भवताप
ताप एक कु एक एहा बळी करंती जीवे धड़ा धड़ी क्षण को मन समुद्र रे उठित रंग आक्रोश रे प्रतीक चिंता जे तरंग हृदय नहु शांत पंडित धाई धन दक्षिणा देई देई मंदिरे व्याकुल क्रंदन करंती दुखी जीवगण गंगा रे स्नान बार व्रत पूजा उपास विधि मत जीवन सारा करुथांती तथापि दुख भोगुथांती हे गुरुदेव भक्त प्राण भक्त पाई तुम जीवन हेले भक्तर संधि काल आरंभ तुम कृपा खेल भक्त जीवे हुए निराशा से बेड़े तुम्हें कहूँ आशा अंतरे सिंची भाव जल दिया ज्ञान साथियो बड़ा जा प्रति झरे कृपा भाव नयनु तव गुरुदेव से कृपा बारी साथे मिसी दुहई हरि कसकती जा प्रति तुम्हें कृपा कर समस्त शक्ति ताजा कर शक्ति जाने न होई तो आज्ञानी जेपरी तम इच्छा हुए सेपरी अग्नि वायु धाए पंचभूत तमर दास जल माटी पुणी आकाश हे गुरु सखा भाई माता हे प्रिय प्रेमा शील पिता बसी था मो श्रद्धा फूल घेर उठा मोहित हृदय उद्याने रूपार पारिजात बने दिशे तुमर दिव्य रूप चिन्मय आभारे स्वरूप मेरे मन हुए स्थिर गुरु बर गुरु माध्यने ऊर्धने
झलसे रूप ज्योतिर्मते आभा देखित मारु पर मन से ठारे हुए स्थिर स्तब्ध हुए पंच प्राण पवित्र हुए मोनयन कि कांदी माया से चिदाकार नहीं मुनिबाकु रसना स्तब्ध अहिबाकु जेमिति बाछुरी कुझुरी गोस्तनु दूध जाए सरी सेमिति वात्सल्य तुमार झरई होई उपाकर गुरुदेव प्रियतम तुपते साष्टांग प्रणाम चरण धूली देहे बोली सर्वांगे पवित्र होइली देखी तुम दिव्य चरिता सभिए हुअन्ति चकित भावन्ति संसार मरुरे सीता झरे रूप करुणाहित स्वरूप समस्त पद भोगतर असंख्य पार क्षमा कर श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राणमो खोजे पाद तव श्री पयरघनाए एकाग्रता श्री मनारे एकाग्रता श्री मनोरे एकाग्रता श्री मनोरे Shri Sai.